ये बहुत मजेदार है। कैसा लगा? ये ज़्यादा अच्छा लगा। वहाँ पर जाकर के हम अलग अलग जगह पे देखेंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर व्लॉग। और ये व्लॉग मैं बना रहा हूँ नवरात्रि के स्पेशल ओकेजन पे, यानी कि ये व्लॉग बेस्ड होगा नवरात्रि के ऊपर, यानी कि सभी कुछ इसमें नवरात्रि का आपको देखने को मिलेगा। यानी कि इलाहाबाद में जिस तरीके से नवरात्रि मनाई जाती है हम वो आपको बताएंगे। कैसे झांकियां निकलती हैं यहाँ पर, कैसे लोग एंजॉय करते हैं और हमने कैसे एंजॉय किया ये भी इस व्लॉग में आपको बताऊंगा। तो जल्दी जल्दी से व्लॉग स्टार्ट करते हैं और मैं मिलता हूँ आपको आपकी इलाहाबाद की जो सारी झांकियां हैं या सारी जो पंडाल वगैरह है उसको दिखाने के बाद। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go. I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. तो गाइस, मैं हूँ अभी इलाहाबाद के अशोक नगर में और आप ये देख रहे हैं ये पूरा ये असम मेघालय के तर्ज पे बनाया गया और बहुत ही अच्छा दुर्गा पूजा पंडाल है जिसको मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। आप ये देख सकते हैं ये पूरी भीड़ जो आप देख रहे हैं पूरी लाइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम है, पर चलते हैं अंदर और देखते हैं अंदर का नज़ारा। Demons dwell, my own little nightmare, I call it hell, oh well. It's time to get back up, climbing and climbing, I'm done with this ride. तो फिलहाल मैं हूँ इस समय अल्लाहपुर के इलाहाबाद में और ये वहाँ का दुर्गा पूजा का पंडाल है। अगर मैं आपको पूरी तरीके से दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। काफ़ी लंबा और काफ़ी अच्छा बनाया गया है, एकदम गोल टेंपल टाइप का पूरा बनाया गया है। और मैं अंदर करके दर्शन करके आ चुका हूँ और लाइटिंग काफ़ी अच्छी दिखाई गई है और काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ का भी। थोड़ा बहुत प्रोग्राम भी चल रहे हैं, बच्चे वगैरह का डांस वगैरह है, सिंगिंग कॉम्पिटिशन भी है, तो ये भी सब है और बहुत रात तक चलेगा। तो हम इसको छोड़ते स्किप करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आगे भी बहुत सारी दुर्गा पूजा वहाँ पे भी चलते हैं। So I could feel something else. Yeah, I guess I had my bad days, but it doesn't mean I lost myself. Darling, where were you when my heart was on the ground? I thought time would prove that you would stick around. I guess time stood still, a king without his crown. Now I'm breaking and you're faking, girl. You never made a sound. I'm tired of the pain.
I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go. I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Go away. I'm tired with yesterday. Harder, harder. My demons dwell, my own little nightmare, I call it hell, oh well. It's time to get back up, climbing and climbing. I'm done with this ride, is what I tell myself, so I could feel something else. कैसा लगा? ये ज़्यादा अच्छा लगा। मूर्ति तो अच्छी है ना? Yeah, I guess I had my bad days, but it doesn't mean I lost my styling. Where were you when my heart was on the ground? I thought time would prove that you would stick around. I guess तो फिलहाल हम अभी पैगोड टाउन में इलाहाबाद में, और जो आप ये देख रहे हैं ये बना हुआ है पंडाल माता जी का, और माता जी मेरे पीछे बनी हुई है, आप इधर देख सकते हैं यहाँ पर। और पीछे एक शो हो रहा है, अगर मैं दिखाऊँ आपको तो आप देख सकते हैं पीछे साइड में थोड़ा बहुत सिंगिंग का शो हो रहा है, कुछ लोग गा रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है, बट हम लोग हर जगह घूम रहे हैं, तो हम लोग अभी आप यहाँ से चलेंगे क्योंकि आगे भी बहुत सारी जगह जाना है, और वहाँ पर जा कर के हम अलग अलग जगह पे देखेंगे कि कैसे दुर्गा पूजा कहाँ पर है। तो फिलहाल हम लोग चल रहे हैं, आगे चलते हैं। a king without his crown. Now I'm breaking, you're faking, girl. You never made a sound. I'm tired of the pain. Go away. I'm tired with yesterday. Harder, harder. बहुत मजेदार है सच में। मुझे लगा था कि शायद ये काफ़ी कठिन होगा, बट एक हाथ से होल्ड करना और उसके बाद इस कैप्चर को एंजॉय करना काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। फाइनली ये ख़त्म हुआ है ब्रेक डांस और चैन की सांस। तो फिलहाल हम हैं इस समय ज़मीन से काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर, क्योंकि हम हैं इस समय इस बड़े वाले गोल गोल झूले पे जो कि लुकरगंज मैदान से है। बहुत अच्छा दिख रहा है।
I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Go away. सो गाइज ये था पूरा टूर जिसमें हमने आपको बताया कि इलाहाबाद में किस तरीके से दुर्गा पूजा या नवरात्रि मनाई जाती है, कैसे पंडाल सजाए जाते हैं इलाहाबाद में, और बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई, कैसे मस्ती किया हमने झूलों में, कैसे शॉपिंग वगैरह किया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप चाहते हैं मुझसे डॉक्टर सत्या से पर्सनली बात करना तो इस वीडियो के नीचे लिंक हुई है हमारे इंस्टाग्राम की और फेसबुक पे, वहाँ जाइए हमें फॉलो करिए और मुझे भी आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, ताकि हमसे आपकी बात होती रहे। तो मैं मिलता हूँ आपसे इसी तरह के अगले व्लॉग में, बहुत ही जल्दी व्लॉग आएगा अगला। तो प्लीज़ चैनल को फॉलो करिए और हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय।